हाँ बेटा, पहला डाउट तुम लोग का था, दैट इज लोकेट द फॉलोइंग rational numbers in on the number line. Okay, that is 0.532 and 1.15 bar. Okay, तो ये एक्चुअली तुम्हारे जो पुराना इंसेटिव बुक था, पुराना इंसेटिव बुक, दैट इज द ओल्ड इंसेटिव बुक में इसके बारे में दिया गया। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट एक बार पुराना इंसेटिव बुक दिखा देता, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पुराना इंसेटिव मतलब तुम्हारे घर पे भी होगा, कोई सीनियर का होंगे तो रख देना। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ओल्ड इंसेटिव बुक on the topic 1.4 number system. You can see this one called magnification. Okay, here you can see that is 2.65, presentation of 2.65. तो 2.65 क्या है, 2 और 3 के बीच में 2.65। देखो स्टेप बाय स्टेप, suppose it is given 2.65, so it will be 2 and 3, 2 और 3 के बीच में होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इक्वल डिविजन 10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। इसीलिए पहले 3 मत लिखना, पहले डिवीजन करने के बाद लिख देना। ओके, so it will be better. 3, what I am talking, that is this will be 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0. This will be 2.9. Okay, so 2.65, 2.65, that will be between 2.6 to 2.7. Okay, this will be 1, 2, 3, 4, 5. This will be 6, 2.6, and this will be 2.7, 2.7. So 2.65 and 2.7 in between 2.65 lies. Okay, that means 2.6 means what? 2.60, and 2.7 means what? 2.70. इसके बीच में कौन आता है? 2.65 आता है. You have to magnify this one. तो इसको तुम थोड़ा सा बड़ा लोगे. ओके, this will be 2.60, 2.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okay, so it will be 2.61, 2.62, 63, 64, 65. So it will be
2.65. 2.65. ओके, लाइक दैट। और मैंने हैंड राइटिंग बताया, ठीक है। अभी देखो ये चीज है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा भी सकते हो, टू 2 और 3 के बीच में। ओके, नंबर 1। अभी ये 2 और 3 के बीच में इतने सारे पॉइंट्स है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 and 2.7. So this number 2.65 in between 2.6 and 2.7. I think you understood it. So you have to magnify it 2.6 and 2.7. So this will be 2.60, this will be 2.61, this will be 2.62, this will be 2.65. Okay, इसको अपने लेवल से थोड़ा लेंदियर बना देना। ओके, अंडरस्टूड। अभी टू योर क्वेश्चन, इन द न्यू बुक, in the new book it is written 0.532, 0.532. So you have to write the number 0.532. Okay, it will be between step 0.5 to 0.6 के बीच में। this one, इसको 0.5060. So it will be 0.53 to 0.54 in between. So in between the numbers will be 0.531, 0.532. Sorry. Okay, you'll get 0.532. Like that, you have to draw number line. You have to represent this one 0 line, this one 0.5, and make 10 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That will be one position. And in between 5.3, 0.53, 0.51, 0.52, 0.53. This one is 0.53. 51, 52, 53. Okay. और जैसे 0.5 means what? 0.50, 0.60. तो 0.51, 0.52, 0.53, like that. Okay. And 0.53, and this will be 0.54. Okay, so you have to magnify it. This one is 0.53, 531, 532, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Five, 4. So you can imagine it like this: 0.530, 0.40, 531, 532, 533, like that.
So it will be 0.531, 0.532, and your question is 0.532. So it will be 0.532, because this will be 0.530. So it will be 0.532. ओके, अभी तो कोई शायद जगह नहीं होगा. ओके, सुबह सुबह बेटा जागा करो तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और रिटेनिंग पावर भी बढ़ता है बेटा. ठीक है, 0.532. ओके, this one is 0.532. 0.532. Okay, so 0.532, it will be between number 1 0.5 and 0.6. Okay, and this will be 0.50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 510. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this will be 0.53 and this will be 0.54. So again you have to magnify it. 0.53, 0.54. So 0.531, this will be 0.532. Okay. Achha, next question was 1.15 bar. 1.15 ऊपर बार. इसको बता देता हूँ. ये भी पुराना एनसीईआरटी बुक में है, देखो. 5.377 7 के ऊपर बार है. ओके, सो ये जो है ना 5.77 लाइक दैट. दिस वन इज 5.377 ऐसी चल. ओके, so this will be under 5 to 6. 5.37 bar, that means it will be between 5 and 6. 5 and 6 negative to magnify, so it will be 5.3 to 5.4. Okay, now 5.3, 5.31, 5.32, 5.3, 5.5, that is 34. This will be 5.35 like that. But this particular number 5.37 belongs to what? 5.37 and 5.38. Okay, 5.37 and 5.38. Okay, so again you have to magnify it. 5.37, 5.38. Okay, this is the old book. So it will be 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, and here it will be 5.375. This will be 5.376, and this will be 5.377. Okay, so in new book this question is like this: 1.15 bar, that means 1.155. Okay, like that. So first of all, step 1, it will be 1.1 to 1 to 2. This number comes belong 1 to 2, 1 digit. Again it comes belong 1.1 to 1.2. Again it comes belongs 1.15 to 1.16. 1.16 like that. Input in the numbers 1.151, 1.152, 1.153,
1.154, 1.155. Okay, like that you will get the number. You can see here. So you have to draw the number line. Okay. This will be 1. This will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. This will be 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2.0. Okay, like that. So again it will come 1.1. 1.1 is here and 1.2. So you have to magnify it. You have to magnify it. This will be 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This will be 1.2. Okay, but you have to get 1.155. 1.155. So this will be 1 point, like that 0, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 16. So this particular number 1.155 belongs to what? To 1.15 and 1.16. Again you have to magnify it. So here 1.15 and this will be 1.16. Okay, यहाँ पे एक जीरो इसी याद रखने के लिए. So this will be 1.151, 152, 153, 154, 155. This will be 1.155 and this is the answer. This will be the answer. Okay, 1.155. इधर भी एरो कर सकते, इसे कर दो, साइड में इसे लिख दो. This point is 1.155. Okay, understood. देखो एक बार बुक में, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में तुम्हारा एग्जाम्पल था 5.37 को पर बार है. ओके, तो 5.37 को पर बार देन 5 to 6. Okay, and 5.3 to 5.4. Okay, again 5.37 to 5.38. So you will get here 5.377. Okay, like that. You can make another line. You can make, this one is 1.55. Okay, 1.155 मैंने दो बार लिख दिया. 1.155 3 times also you can write. Okay, like that. This is the approximate value, 1.155. Okay,
जो 1.15 bar means what? 1.15555. At least 2 times you can see. Okay. You can show only 2 times. अभी दूसरा क्वेश्चन जो था, अभी और किसका डाउट है देख लेता हूँ. और क्या डाउट भेजा. अब बेटा तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया. ओके, दिस 2 डाउट्स. और उसके बाद अच्छा, ऑल डाउट्स हियर. That is 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14. अच्छा, ओके. एक्सरसाइज कौन सा? लास्ट वाला, एंड ऑफ एक्सरसाइज. ओके, ठीक है. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कर दिया था. 10 वाला डिस्कशन हो गया था, समझ में आ गया था. 11 वाला भी तुम लोग को समझ में आ गया था. उस टाइम पे तुम लोग जब सेंड किया 12. थर्ड वाले में डाउट था तो मैंने 13, 14, 15 एंड 16 के बारे में डिस्कस कर देता. क्वेश्चन नंबर 13. A equal to 7 by 12, B equal to 5 by 6. Okay. Express A and B in the form K1 upon M, K2 upon M. Okay. Where K1, K2, M are the integers. And K2 minus K1 greater than this particular term should be satisfied. Okay. K2 minus K1 should be greater than 6. Using the same denominator M is exactly using this condition. You have to write exactly 5 distinct rational numbers lying between A and B, keeping an integer numerator. What is the meaning? 7 by 12, 5 by 6. 12 not equals to 6. Okay. Because यहाँ पे M is 12, यहाँ पे that is 6. So you have to equalize it. 7 by 12, this one 5 into 2, 6 into 2. So 7 by 12 and 10 by 12. 10 minus 7, that is 3. Not greater than 6, because this will be K1. Greater वाला K1, इधर वाला K2. K1 minus K2 should be greater than 6. But 10 minus that will be 3, not greater than 6. Okay. So again you have to do. Now equalize it. 7 into 12 into 2. 10 by 12 into 2. So it will be 14 by 24 and 20 upon 24. Okay.
Here also you can see 20 minus 14, that will be 6. 6 is not greater than 6. Okay. This is also not greater than 6. Because this condition here is not satisfied. Okay. So again you have to take 7 by 12 and 10 by 12. You have to multiply it with 7 into 3, 12 into 3, 10 into 3 and 12 into 3. So it will be 21 upon 36 and 30 upon 36. Now 30 minus 21 equals to 9 is greater than 6. Therefore accepted. Okay. Therefore accepted. Okay. Now you can write 5 numbers. Now 5 rational numbers between 21 upon 36 and 30 upon 36 are 22 upon 36, 23 upon 36, 24 upon 36, 25 upon 36, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26 upon 36. Okay. I think you understood now. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Now, next the second part of the question. What is written? You have to 5, this is 6. Okay. So, explain why the condition K2 minus K1 is greater than n plus 1 is necessary. Greater than is necessary to find n such rational numbers between the two rational numbers a and b using this method. Okay. उसमें देखो बेटा जो नंबर दिया गया था इस नंबर में जो K1 K2 जो नंबर्स होगा integers between K1 and K2 कहां से शुरू होगा यहाँ पे K1 प्लस 1 और लास्ट वाला होगा K2 माइनस 1 ऐसे ऐसे करके K1 प्लस K2 K2 प्लस K3 चलते जाएगा और इससे पहले K2 से पहले K2 माइनस K2 माइनस K1. ओके. तो अभी देखो मान लो कि तुमको 7 और 10 के बीच में बोला तो तुम क्या करोगे ये अच्छा थोड़ा सा और छोटा कर 3 और 10 सपोज 3 और 10 के बीच में तो इसके बाद वाला नंबर क्या 3 प्लस 1 दैट इज 4 3 प्लस 2 दैट इज 5 तो 4 आएगा 5 आएगा लास्ट वाला नंबर क्या है ये 9 आएगा 9 मीन्स व्हाट 10 minus 1 तो like that you can write here K1 plus 1 K2 plus 2 K3 plus 3 and K2 minus 1 जैसे लिखा ना 10 minus 1 और 3 plus 2 like that.
दैट मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, हमें यहाँ पे जो मिल रहा है देखो 3 और 10 के बीच में कितना रैशनल नंबर्स मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3 रैशनल नंबर्स मिल रहा है। देयरफॉर अभी हम लोग को कितना चाहिए, n रैशनल नंबर्स, मतलब हमको चाहिए 4 रैशनल नंबर चाहिए सपोज, कि नहीं तो जितना भी बोलेंगे दैट इज यहाँ पे जैसे n बोल रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, K2 माइनस ये वाला K2 था ना, K2 माइनस K1 10 और यहाँ पे कौन सा 3, K2 माइनस K1 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू n। इसको और एक बार देखो, ये तो 3 है ना, 3 से ज्यादा नंबर चाहिए, 3 से ज्यादा नंबर चाहिए, दैट मीन ये जो 3 है ना, जो डिफरेंस से एक कम n से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स K2 माइनस K1 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू n प्लस 1। यहाँ पे एक्चुअली ग्रेटर इक्वल्स टू होता है n प्लस 1 हो, नहीं तो n प्लस 1 से ग्रेटर हो, तो दैट मीन्स K2 माइनस K1 शुड बी, तुम्हारे बुक में इक्वल का साइन नहीं दिया, तो इक्वल का साइन तुम लोग हटा ही दो, शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस 1 n प्लस 1, यही चीज पूछा गया। बिकॉज यहाँ पे क्या था, 5 था, दैट इज 6, तो यहाँ पे n है, सो इट विल बी ग्रेटर देन n plus 1. So what you have to write? K1 plus 1 एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। yes, question number 14, the three rational numbers okay अच्छा, three rational number xyz, three rational numbers xyz satisfy x plus y plus z equals to 0 and xy plus yz plus zx equals to 0, so that all the rational numbers xyz must be simultaneously 0। ओके, तो इसको 0 करना है। ओके, so it is given x plus y plus z equals to 0 and also xy plus yz plus zx equals to 0। okay, so this will be the first equation and this one is the second equation। okay, अभी देखो x plus y plus z और xy yz zx कौन सा आइडेंटिटी में आता है, that one is x plus y plus z का होल स्क्वायर equals to x square plus y square plus z square plus 2
xy plus 2yz plus 2zx. So is x square plus y square plus z square plus 2xy plus yz plus zx. X plus y plus z का whole square. Okay. Now you can see x plus y plus v0 का square and x square plus y square plus z square अच्छा x square plus y square plus z square plus 2 into 0. So it will be x square plus y square plus z square equal to 0. I mean, now you can see here it is given three rational numbers. Three rational numbers is given. All the rational numbers, three rational numbers x, y, z. All the rational numbers x, y, z must be simultaneously 0. अभी देखो बेटा, मतलब तुमने कोई भी वैल्यूज ले लो, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, कुछ भी लो, लेकिन इसको ऐड करो तो ए भी पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी भी 0 नहीं आ सकता है. कोई पॉजिटिव नंबर लिया का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कि मतलब हाफ का स्क्वायर, लाइक दैट, कोई भी नंबर लिया, ये कभी 0 नहीं आ सकता है. ओके, इट विल नेवर बी 0. एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है. अभी क्लियर है, अभी क्लियर है. It will be never be 0. It will be 0 even only if and only if x equals to y equals to z equals to 0. That means x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. So sum of square of three rational numbers is 0. That means each rational number must be equals to 0. Because नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और सारे पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, 0 कभी नहीं होगा. तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. So that the rational number a plus b by 2 lies between rational numbers a and b. वो तो पता ही है, अभी इसको प्रूव करना है. जैसे देखो, कोई भी बोलता है 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 plus 3 by 2, 5 by 2, that is 2.5. ये तो हम लोग लिखते हैं ना. एक मिनट, थोड़ी सी लाइट कम आ रहा है क्या? हाँ बेटा, अभी ठीक कर दी. 2 plus 3 by 2, that is 2.5. ओके, अभी सेम थिंग यू हैव टू प्रूव. तो हमने वन नंबर वी हैव टेकन 2,
Another number is taken 3. So if it is A, this one is B. We are considering A is lesser than B. We are considering A is lesser than B. So let consider A is lesser than B. That means A plus B by 2 should be greater than A and lesser than B, like that. 2 plus 3 by 2 is 2.5. 2.5 is greater than 2 but lesser than 3. That means if considering A is less than B, then A plus B by 2 will be greater than, this one is a sign of greater than, this one is lesser than. So A plus B by 2 is greater than A and lesser than B. अभी उसके बाद मान लो हम लोग ऐसे कर लेते, ऐसे भी हो सकता है 3 और 2 पुट करें तब भी. That means A plus B by 2 is in between A by B. So therefore A plus B by 2 is a rational number between A and B. Again another case, case 2. A is greater than A. Sorry. A is greater than B. A is greater than B. Therefore A plus B जो है, A plus B by 2 greater than B, lesser than A. Okay? Just its opposite. Therefore, A plus B is a rational number between A and B. Therefore, A plus B by 2 is a rational number between A and B. Okay, so you have to take two cases. When A is lesser than B, then A plus B in between A and B. If A is greater than B, then A plus B by 2 is in between B and A. Therefore, A plus B by 2 is a rational number between A and B. So in both cases, we can prove A plus B by 2 is a rational number between A and B. Okay. Next one, last question. Find the lengths of the hypotenuse of all the right angle triangles. अच्छा, एक बच्चे का डाउट, हाँ बेटा इस तरीका से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं. A plus B is greater than A.
यहाँ पे भी ले सकते फर्स्ट केस। तो हाँ, एक इस तरीका से भी, 1 मिनट, जो तुमने मैसेज सेंड किया उसी को मैं बताता देखता। हाँ बेटा 1 मिनट। अच्छा ओके, तो केस 1 हम लोग क्या लिया, बी इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर ए प्लस ए ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो 2a is lesser than ab is lesser than a plus b by 2, a plus b is greater than a। दूसरा, इसको भी प्रूव कर सकते हो, is lesser than a, तो b plus b lesser than a plus b, तो 2b is lesser than a plus b, तो b is lesser than a plus b by 2। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ऐसा लिख देता हूँ बेटा। b is greater than a, that means b plus b is greater than a plus b। हाँ बेटा इस तरीका से आसान हो, 2b is greater than a plus b, तो b is greater than a plus b by 2, that means it will be a plus b will be lesser than b, therefore a plus b by 2 is greater than a and lesser than b, therefore a plus b by 2 lies between a and b, therefore a plus b by 2 is a rational number between a and b। क्या बेटा और एक बार बता दूं? ओके, एक ही कंसीडर किया था ना, a इज लेसर देन b, तो दोनों तरफ a ऐड करोगे तो यहाँ पे a प्लस b, तो a इज लेसर देन a प्लस b बाई 2 एंड b इज ग्रेटर देन a, तो बोथ साइड b ऐड करो, तो 2b इज ग्रेटर देन a प्लस b, b इज ग्रेटर देन a प्लस b बाई 2। सो a प्लस b बाई 2 इज greater than a but lesser than b, a plus b by 2 lies between a and b, therefore a plus b is a rational number between a and b। ओके, और कोई डाउट तो नहीं था तुम लोग का? हाँ बेटा, और भी कोई जो डाउट्स तुम लोग भेजा था मैंने क्लियर कर दिया। अभी तो सभी जागे नहीं हो ना बेटा, तो तुम लोग बाद में एक बार चेक कर लेता हूँ और कोई
चीज बचा तो नहीं है? जितना मैसेज आया था क्लियर कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, दैट इज 6.2 का 9th क्वेश्चन। 6.2 का 9th, ओके, वो वाला ही बताता हूँ। 6.2 का 9th क्वेश्चन। एक मैं बेटा बुक्स लेके आता हूँ। 6.2 का 9। एक मिनट। हाँ बेटा, इस डाउट क्लास है। ऑलरेडी जो तुम लोग डाउट भेजे हो उस डाउट को हम क्लियर कर दिया है। 6.2 6.2 5 6.1। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला वाला है ना। 6.2 6.2। हाँ, मिल गया बेटा। ओके, क्वेश्चन मिल गया। 6.2 का क्वेश्चन नंबर के चेक करता हूँ। हाँ, अंश का डाउट था। 6.2। हाँ बेटा, एक मिनट। अच्छा, तुम जागे थे बेटा, एक मिनट। अच्छा, तुम लोग मैसेज कर दिया। ओके ओके, एक मिनट। हाँ बेटा, और भी कोई मैसेज आया है? चेक कर देता हूँ। हाँ बेटा, मैंने वो सॉल्व कर दिया, एक बार देख
अभी कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। अभी वो लड़का ने पूछा 6.2 का क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा पूछा, वो वाला सॉल्व कर देता हूँ। हाँ बेटा 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। ओके 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 6 क्वेश्चन नंबर 9। अभी इस इक्वेशन में फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, एरिया एडीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी। तो एडीबी से किसको माइनस करो, पीबीडी पीडीबी, इसको माइनस करो तो क्या बचेगा, एबीपी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इक्वल्स टू एडीसी, एडीसी कौन सा, दिस वन, एडीसी मच एडीसी, इससे किसको माइनस कर रहे हो, एडीसी टू पीडीसी, पीडीसी, तो क्या बचेगा, एपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी। ठीक है बेटा, अंश तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, और अभी टाइम भी हो गया बेटा, घूमने जाना, ठीक है। और फिर 5:15 को भैया लोग आ जाएंगे 12th क्लास के, ठीक है बेटा। तो अभी मैं क्लास एंड कर दे रहा हूँ, तुम लोग जब जग जाओगे इस वीडियो को देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाँ बेटा, आज तो तुम लोग का डाउट था जो रात की क्लियर नहीं किया, इन बिटवीन अभी सुबह सुबह क्लियर कर दिया, ठीक है बेटा। क्योंकि वो 9:30 की क्लास के बाद तो कभी नहीं रहता, इसीलिए तुम लोग कोई डाउट होगा तो तुम लोग सेंड कर देना, है ना। मैं करीब 3:30 बजे जग जाता हूँ, ठीक है बेटा, 3 बजे, तो उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा। फिर जब तुम लोग जग जागते हो उस टाइम में वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। और मैं साथ साथ जिस पेज में सॉल्व करा ना उस पेज को भी सेंड कर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन 2 मेथड में एंड कोई क्वेश्चन 1 मेथड में सॉल्व कराया। शायद और 2 बच्चे प्रेजेंट थे, बीच बीच में और भी कोई प्रेजेंट आए थे, ठीक है। ओके बेटा, क्लास एंड करता हूँ, और कोई डाउट होगा तो सेंड कर देना, ठीक है बेटा। बिकॉज मेरे को अभी तैयार होना है, बिकॉज 5:15 12th क्लास के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। ओके ओके बेटा, जिन लोग का एग्जाम है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा।